Here in Chel, radio telemetry is being used to track cheer pheasants that have been released in the wild and to check on their well-being. 180 kilometers away in Sarahan, Himachal Pradesh's state bird, a rare pheasant, the western tragopan, is waiting to be reintroduced to its native habitat in the high-altitude temperate forest. The challenges of transporting the birds are immense. Therefore, Sarkhan, a site closer to the pheasantry, has been identified, where the reintroduction of the western tragopan is already underway. At the Sarahan Western Tragopan Breeding Centre, birds are tagged before release, and a satellite tagging method is used for post-release monitoring. The weight of the tag should be less than 3% of the weight of the bird and should not interfere with the normal behavior of the species. Both species face several threats in the wild, the key threats being habitat loss and fragmentation and livestock grazing. Today, both these species are threatened, with a global population of less than 2,000 individuals remaining in the wild. The Indian government has prioritized the conservation of these species by placing them in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. Both species are also classified as vulnerable in the IUCN Red List and included in Appendix 1 of CITES. The Jujurana, or king of birds, is over 40 centimeters tall and sports greyish-black feathers and reddish-orange facial skin. The smaller, pale brown females lay 3 to 5 eggs. After an incubation period of 28 to 29 days, the eggs hatch. The chicks are raised single-handedly by the mother through the monsoon and winter. The following spring, she is ready for a new mate. In contrast, the cheer or Wallach's pheasants live in family groups. During the breeding season that begins in March, the smaller females lay clutches of 10 to 11 eggs. Unlike other pheasants, the cheer has a dull plumage of brownish-yellow feathers. The male is a little over 40 centimeters tall with a long buff barred tail and red facial skin. The cheer and the western tragopan are both vital to this ecosystem. The Himachal Pradesh Forest Department has pioneered the conservation of threatened Himalayan pheasants by establishing the Cheer Pheasant Conservation Breeding Program at Khadiyun in Chel, and also the Western Tragopan Conservation Breeding Program in Sarahan, which is the world's only facility for the conservation breeding of this species. By conserving captive populations and simultaneously working to ensure undisturbed wild habitat, there is a good possibility for the successful reintroduction of these pheasants in the wild. However, this aim can be achieved only with the help of the local community who share the forest areas with these endangered species. Welcome back. Into the wild, 2 endangered species now into Schedule 1 of the Wildlife Act of 1972. We have the cheer pheasant and the western tragopan, which has really captured everyone's imagination, also known as the Jujurana in Himachal Pradesh, the bird of the state as well. Only 2,000 left in the wild for each of these 2 endangered species. Veronica. बिल्कुल, और तभी मुझे लगता है अर्जुन, टू मेक सच काइंड ऑफ मूवीज़, जब ऐसी मूवीज़ बनाते हैं तो लोगों में और अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोग जानते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि व्हाट इज़ दिस बर्ड, एंड स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल भी है। सो व्हेन वी क्रिएट सच मूवीज़, व्हेन सच मूवीज़ कम्स अबाउट, तो ये चीज़ें बहुत और लोगों को पता लगता है, फिर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, भागीदारी लेते हैं ऐसे कंजर्वेशन एक्ट्स में।
which is why we have in the studio wildlife filmmaker Imrana Khan. Imrana, warm welcome to you on the Doordarshan morning show. थैंक यू सो मच। इमराना, हमेशा देखते हैं कि शॉट्स बहुत सुंदर हैं, बर्ड्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, नेचर एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट एक चीज़ जो हमेशा मेरे जहन में आती है कि लेंस के जो पीछे है उनको काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसको इस तरह से पिक्चराइज करने के लिए। तो यू एज अ फिल्म मेकर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस, और खासकर अगर आप विमेन फोटोग्राफर है तो वो भी कुछ डिफरेंस है यहाँ पे या सेम फॉर ऑल? So, wildlife filmmaking sounds very glamorous, but it needs a lot of patience. So it can lead waiting for days, for hours to take a single shot, and sometimes you don't even get that after so much of hard work. तो इसमें मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट, कि अगर आपका इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में तो आप इतना एफर्ट डालोगे, आप इतना वेट करोगे उस एक शॉट के लिए। एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर subject, and one needs to really learn about that particular species, about their habitat, about their life cycle, about their behavior. So it takes a lot of interest to be a wildlife filmmaker, and it can only be done if you are really interested and want to make wildlife films. तो इमराना, हमने ये देखा है कि जो दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट्स भी आए हैं ऑन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप फिल्म मेकर हैं, यहाँ पे जब आप फोटोग्राफी करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी इन्वेसिव। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं, दैट इज़ हाउ यू टेक द मोशन पिक्चर्स। हाउ डू यू मैनेज दैट? आपने पेशेंस की बात की है, बट हाउ डू यू इंश्योर कि आप उनके इकोसिस्टम, उनके हैबिटेट में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? सो जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में जानें, उसके बिहेवियर के बारे में जानें, और अपने आप को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, जो एक अपने आसपास एक कैमोफ्लेज बना के वो उसमें पूरे दिन भर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के आने का और शॉट लेने का, विदाउट इंटरफेयरिंग इन देयर बिहेवियर, इन देयर डे टू डे रूटीन. So yeah, I mean, the understanding about the subject is very important, about your species, to know about your species is very important. तो इसके लिए काफ़ी नॉलेज आपको पहले से इकट्ठी करनी पड़ती होगी। और ये तो खैर नॉलेज की बात हुई, आप किसी टफ टेरेन में जा रहे हैं कुछ शूट करने के लिए, तो आप एक्लेमेटाइज कैसे करते हैं? कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं पहले कि जब आप वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, या आप कुछ प्लानिंग्स होती हैं इससे पहले? सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. तो मान लीजिए जैसे कि ये भी जो हम फिल्म देख रहे थे होम कमिंग, होम कमिंग जो है वो जो फिल्म है, इट्स ऑल ऑन, द फिल्म इज़ बेस्ड ऑन दी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन ब्रीडिंग. तो इट वाज क्वाइट अ कंट्रोल सिचुएशन. बट इधर भी जब हम लोगों ने शूट किया तो जाने से पहले हम लोगों ने टीम के साथ में डिस्कशन करा वहाँ की कि हम लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हम लोगों को जब हम शूट करेंगे तो किस टाइम पे शूट करना चाहिए, ताकि वो जो बर्ड है उसका जो एक डेली रूटीन है उसमें हमारा इंटरफेरेंस ना हो. तो इसी तरह से जब भी हम किसी शूट के लिए जाते हैं तो उस स्पीशी के बारे में जानते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग, हमारा जो एक डे टू डे रूटीन होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं हम लोग. तो फॉर एग्जांपल हम लोग एक शूट कर रहे थे टर्टल का, तो वहाँ पे हम लोग इधर लक्षद्वीप में हम लोग शूट कर रहे थे ग्रीन टर्टल के लिए. तो उस टाइम जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमने पहले स्पीशी के बारे में जाना, वो किस टाइम आती है, कैसे आती है, वो कब बाहर आते हैं बीच पे अंडे देने के लिए, हम लोगों को कैसे छुप के उसको शूट करना है ताकि उसका जो एक पैटर्न है, उसका जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तो just to answer Veronica, it's a combination of understanding the subject and also preparing, make our own plans to shoot that. ये जो आप स्पीशी शूट कर रहे हैं, दे आल्सो सब्जेक्ट ऑफ कंजर्वेशन, और यहाँ पे आपका जो रोल है दैट्स अ फिल्म मेकर. तो एक तो आप वाइल्ड में शूट कर रहे हैं, दूसरा है कि वेयर दे आर मिसयूज्ड फॉर प्राइवेट गेन, फॉर प्राइवेट प्रॉफिट. वहाँ पे आप इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं? क्योंकि जैसे माइक पांडे जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं, दे आर ब्रिंगिंग टू लाइट, दे ब्रिंगिंग अवेयरनेस कि देयर इज पोचिंग एंड ऑल काइंड्स ऑफ इलिसिट बिहेवियर. तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे देखती हैं एज अ फिल्म मेकर? See, I think it's all about ethics.
कि जब आप शूट कर रहे हैं, ये एक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर कि आप अपने शॉट के लिए किसी भी स्पीशी को बेट नहीं कर सकते। मतलब आप अपने शॉट के लिए कुछ आर्टिफिशियल ला के स्पीशी को डराने के लिए, स्पीशी से आवाज़ निकालने के लिए यू कैन नॉट फोर्ज इट। तो वो एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ फिल्म मेकर जब भी आप किसी स्पीशी के साथ शूट करने जाते हैं तो, या जब भी कोई भी आप वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे होते हैं तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो आई थिंक कम्युनिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आसपास के लोग भी बहुत ज़रूरी रोल निभाते हैं अर्जुन। किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, को एग्जिस्टेंस सिखाती है कम्युनिटी। तो लेट्स गो टू नागालैंड नाउ एंड सी धीकू रिवर का कंजर्वेशन देखते हैं किस तरह नागालैंड में किया गया है। लेट्स हैव अ लुक। Amakan itu pan thakapra season unseason pan nimiti ko duk nai obigyo chala khatoni la kya khatoko no lotsi nte olegila ene tipo zuye nanga ogila. Before, there was rampant usage of explosives like chemicals and also rampant indigenous type of fishing. And because of those practices, fishes were gradually deteriorating. Conserving this part and conserving these areas and also restoring to a certain point of time, we need a conservation. On 9 February 2012, TGZ PMC Tsila Green Zone Project Management Committee invited us to have a meeting on Diku Point. There they motivated us in conserving the Nanga River from the starting of Diku till Tsila Green Zone Project Management Committee CCA. All 14 villages, councils met and taken up the resolution to conserve the Nanga River, both sides, half kilometer and 100 meter of all the feeder streams. MOU was signed by all the village councils. Based on that day, the bylaws has been prepared. And based on the MOU, banning of hunting and fishing were restricted. So, the youth must come forward and join this initiative and combine forces so that we can make it a stronger move what we are doing. The role of community in the conservation effort, Veronica, यहाँ पे जो वीडियो में ये देखने को मिला कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 14 विलेजेस कि वो जो अपने फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल रखें and not use illicit material like explosives and chemicals to catch fish, but use their age-old customs to catch fish so that it's sustainable, the river is not polluted, and at the same time they are able to feed themselves also. जब मिल के सब लोग ठान लेते हैं कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, हमें सी अल्टीमेटली अगर आसपास फॉरेस्ट नहीं है, अगर नदी में पानी ही नहीं है तो मछलियाँ कहाँ से होंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि को एग्जिस्टेंस रहे, जंगल हरे भरे रहें, एंड इन दिस कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जब सब मिल के ठानते हैं कि हमें ये करना है तो कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होता है. तो इमराना, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि
किस तरह कम्युनिटी इस कंजर्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? So, see, in India, community and conservation, they are interconnected. So, they both go hand in hand. So, if we talk about conservation, we end up talking about people and wildlife, people and forest. So, we cannot think of conservation without the involvement of community. So, as you have seen in this film also, it's two different communities coming together to conserve that river, and that is also at the two stretches, upstream and downstream. So, and you know, in most of our films, हमारी जो फिल्म्स हैं वो कंजर्वेशन इश्यूज़ पे बहुत सारी हैं, और फिल्म के दौरान हमने भी काफ़ी ये सीखा है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी कंजर्वेशन इनिशिएटिव को एक सक्सेसफुल कंजर्वेशन इनिशिएटिव बनाने के लिए. तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इस कॉन्जर्वेशन के अवेयरनेस लाने के लिए व्हाट इज द रोल ऑफ द फिल्म मेकर, अपार्ट फ्रॉम जो एक नेचुरल हैबिटेट में तो आपके पशु पक्षी हैं ही, बट जो मैल प्रैक्टिसेस हैं जैसे पोचिंग चल रही है उसके भी फिल्म बनते हैं, तो वहाँ पे फिल्म मेकर की क्या भूमिका है? सो देखिए, एज अ फिल्म मेकर अभी जिस ईरा में हम रह रहे हैं, अभी हमको पता है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. So, from mobile phones to social media to Netflix, video has become a very important channel for information dissemination and awareness. तो जैसे in 2000 ये एक माइक पांडे की, जैसे आपने उनका भी नाम लिया, उनकी एक फिल्म थी शोर ऑफ साइलेंस, द स्लॉटर ऑफ whale sharks in India. So, this was the film who led to ban the killing of whale sharks in India. And later it included under the Wildlife Protection Act. So, it was a big thing. And same in 2012, a very small clip of killing of Amur falcon, you know, led to a whole successful online campaign on saving Amur falcon, and ultimately it led Ben to ban the killing of Amur falcon during his fly from Mongolia to South Africa. So, what I am trying to tell you here is, as a filmmaker, our films can play an important role to bring the change. In fact, I just like to add one thing here. जो फिल्म अभी आपने देखी, ये एक प्रोजेक्ट है, ग्रीन हब प्रोजेक्ट, जो हमने स्टार्ट किया था 2014 में. तो बेसिकली दिस प्रोजेक्ट इज़ it's a community based fellowship and a video resource center. Basically, it engages and empower youth in conservation work. So, this is the film made by one of the fellows from the Green Hub. So, this is how, you know, a lot of fellows are directly involved in conservation work, and these are the fellows who belong from the community. Well, thank you so much, Imrana, for being with us on the Doordarshan morning show. I'm sure our viewers enjoyed your responses on the dual role of the filmmaker, not only to bring to light the endangered species in the natural habitat, but also help bring about conservation awareness as far as these species are concerned. Thank you so much, Imrana, for being with us on the program. Thank you so much for inviting me. Thanks. Well, it's time for our next segment, which is Shot by Chance. The prey itself, the garden lizard. This is a photograph taken by Rajiv Tyagi. Veronica, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि the garden lizard is a pet of this bird of prey known as shikra. ऐसा लग रहा है कि बस उसको वो सराह रहा है, प्यार कर रहा है कि यू नो हाउ अ मदर डज टू द चाइल्ड. पर अर्जुन, इस फोटो से देख के मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक पिक्चर बहुत सारी कहानी बयां करती है कि इस फोटो को हम देख सकते हैं कि इससे पहले क्या हुआ होगा और इसके बाद क्या होने वाला है. द पिक्चर इज नॉट अ स्टिल बट इट्स अ होल मूवी इन इटसेल्फ, अर्जुन. Absolutely right, and we can see the garden lizard in the process of changing its color, also trying to shield itself, use its instinct to protect itself, but it's about to be eaten by this bird of prey, which is known as a shikra. Great photograph by Rajiv Tyagi, who's contributed to our program via email ID, the ddmorningshow23@gmail.com. And we encourage all our viewers to contribute in a like manner on this email ID.